screen is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. So last lecture we have seen the support vector machine. Am I right? How that particular support vector machine work, how we use the support vector machine to for the classification of the particular data. So if we have the data, we have the two set of the data, and we have to identify where to put the new data when the test data is come, then how to predict that particular data is go to classification A or classification B. So for that purpose we have the support vector machine. If you see this particular diagram, there is a circle and a square. So we have the clustering of the circle, cluster of the particular square, and we have put the hyperplane between this particular two clusters. So it is very easy to identify or to classify the two groups, and we have the support vector. So we can plot a parallel line to our hyperplane, which is nearer to our cluster. The point is nearer to that particular cluster, and we have the maximum margin between that particular hyperline. If you have the maximum margin between the hyperline, then we can say that this particular uh, graph is accurate for the support vector machine. When a new data comes, then it is very easily we can put that particular data into the particular group according to its feature and according to the support vectors. जैसे कि हमने एक कल एग्जांपल देखा था कि there is a particular model, we have to train that particular model that to identify the data is dog or the data is particular cat. जैसे कि हमने एक मॉडल को ट्रेन किया है, उसको डेटा पहले से दिया है, उसका सपोर्ट वेक्टर भी बनाया है. अगर ऐसा कुछ नया डेटा आता है कि वो कैट है या डॉग है, उसको आइडेंटिफाई करो. सो how that particular model will predict whether it is a cat or whether it is a dog. So we have the cluster, we have the some feature, we have the support vector. So it will try to match that a particular feature, it will try to match with the support vector, and when it comes closer to the support vector, then it will identify and put that particular new data according to that particular cluster which has we have trained that particular model. So this way support vector machine can use, and it will predict the new data. जैसे कि हमने मॉडल को पहले क्या दिया था, ट्रेनिंग दिया था कि डॉग के फीचर ये है, कैट के फीचर ये है. अगर कुछ न्यू नया ये आता है, डेटा आता है, that have means if you give the new data that is strange data and it has some similar feature like the cat. If you give the new data that is a cat, and that particular cat has a similar feature of a dog, at that time it is very difficult for that particular model to predict the data whether it is a cat or not, or whether to put that particular new data into the category of a dog or into the category of cat. So it give us some support, that is a support vector. That particular support vector work to identify the new data whether it is a cat or whether it is a dog, and according to that particular train means model, that particular new data goes into the category of that particular cat. So it will how it will use the support vector to match the feature of the strange data to match the feature of new data, and according to that particular matching it will put the new data according to its particular class. So we have seen this particular support vector machine. Then we have
that particular support vector machine algorithm can be used for face detection, image classification, then text categorization. Then we have seen the different type of linear support vector machine. So linear support vector machine is nothing but if we draw a particular line, then we are in position to have the two classes. So it is very easy to have the two classes if we put the line between the two data. जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी देखो, अभी यहाँ पे दो डेटा है, आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम? यस अक्षय? Yes, sir. हम्म, अभी ये दो डेटा है, एक ब्लू कलर का स्क्वायर है और ये ग्रीन कलर का सर्कल है. सो हाउ टू पुट द पर्टिकुलर मीन्स कैन वी डिवाइड दिस पर्टिकुलर डेटा बाय हैविंग द लाइन बिटवीन दिस पर्टिकुलर टू क्लस्टर? यस. मान लो यहाँ से मैंने ऐसी लाइन डाली एक, तो क्या हो जाएगा? हाँ, मान लो यहाँ से मैंने ऐसी लाइन लाइन डाली, सॉरी, देखिए. सो हाउ टू classify or how to make two cluster, we can have this particular line or we can have this particular line. So if we put this particular line between these two clusters, then we can easily classify this particular data. This is the square and this is the circle. Am I right? अगर आपने ऐसी एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दी तो इट इज़ वेरी इजी टू क्लासीफाई द टू डेटास, टू सेट ऑफ डेटा और टू हैव द क्लस्टर. Am I right? यस. यस सर. तो ऐसे हम एक लाइन खींच के हम दो जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, अगर लाइन खींच के अगर हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज अ लीनियर SVM, दैट इज अ लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन, एंड द लाइन विच यू हैव ड्रॉ इट इज कॉल्ड एज अ हाइपरप्लेन. अब जो लाइन आपने खींची है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरप्लेन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? Hyperplane. Hyperplane. So here you will easily understood. So here two types of data. जैसे मान लो ये कैट है और ये द डेटा, द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉग, and this is the particular hyperplane which will classify this particular two features, or which will categorize, or which will uh, have the two different classes. One class is of dog, one class is of cat. So hyperplane खींचने के बाद हमें दो क्लास मिल गए. अभी हाइपरप्लेन के नज़दीक जो भी पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? सपोर्ट वेक्टर. उसे क्या कहेंगे? सपोर्ट वेक्टर. सो ऑन पॉजिटिव हाइपरप्लेन, ये जो हाइपरप्लेन है उसके ऊपर का जो ये है एरिया है उसे हम कहेंगे पॉजिटिव हाइपरप्लेन, एंड बिलो द एरिया बिलो द हाइपरप्लेन वी कैन कॉल दैट इज अ नेगेटिव हाइपरप्लेन. सो द पॉइंट which is very closer to the hyperplane, we can say that point is a support vector. That point is a support vector. So we have the two support vector. When blue, this blue square is a support vector for this particular class, that is a square class, and this particular green circle, this particular point is a support vector for this particular class. जो नया डेटा आता है, जो इस सपोर्ट वेक्टर के अगर इधर आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गए डेटा, यहाँ पे डेटा आ गया, तो हम क्या कहेंगे? वो डेटा या वो जो नया डेटा है वो कहाँ पे जाएगा? इस क्लास में जाएगा. अंडरस्टूड? मीन्स वो डेटा क्या होगा? सर्कल ही होगा.
अगर नया डेटा का पॉइंट यहाँ पे आता है किधर तभी, सो इट इज क्लोजर टू दिस पर्टिकुलर support, it is closer to this particular support vector, then we can say that new data goes into this category, that is a square. The same way that support vector machine can be used for the क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं, अगर हमने डेटा दिया कैट एंड डॉग, सो हाउ दैट पर्टिकुलर मॉडल विल आइडेंटिफाई, हाउ दैट पर्टिकुलर मॉडल विच वी हैव ट्रेन दैट पर्टिकुलर मॉडल to predict whether that data is a cat or that data is a dog. So that particular model predict uh, like this way by using the support vector and by using the hyperplane. Understood? So there are two type, then linear support vector machine and non-linear support vector machine. Linear support vector machine means what? हमने अगर लाइन खींच दी और we are in a position to have the two cluster, that is a linear support vector machine. Non-linear support vector machine means what? It is means it is used for non-linearly separatable data. By putting simple line, we are not in a position to have the two classes, we are not in position to have the two cluster of the data, that is a non-linear support vector machine. सो यहाँ पे लाइन खींच के हम दो डेटा को ये कर सकते हैं. सो दिस इज द, ये कौन सा होगा टाइप, बोलिए मुझे, लीनियर या नॉन लीनियर, दिस फिगर? linear, वेरी गुड, लीनियर। लीनियर, इट इज अ लीनियर, क्योंकि हम लाइन खींच के हम दो डेटा को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. अभी ये डेटा कौन सा हो गया, non-linear, नॉन लीनियर, non, बिकॉज बाय पुटिंग द लाइन, अभी कहाँ से भी लाइन खींचने के बाद हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि वी आर नॉट इन पोजिशन टू हैव द टू क्लास और कैटेगरीज ऑफ टू क्लास. सो दैट इज अ नॉन लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन. ये हो गया लीनियर. यहाँ पे खींच के आप क्या कर सकते हो, एक बीच में लाइन खींच के आप ये कर सकते हो उसको. सो दिस इज द बेस्ट hyperplane. Just putting the hyperplane below this particular circle, so you can categorize the data into the two section or a four section when you have the x and y axis. So if in a non-linear data type, how to put the hyperplane? So if you have the circle to non-linear data, then you can easily, जैसे कि आपने बताया था ये डेटा क्या है अपना, नॉन लीनियर है कि नहीं, तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे? जस्ट पुट द सर्कल टू दिस पर्टिकुलर ग्रीन सर्कल, so you can separate the two data. So this is the best hyperline. So this is your hyperline. समझ में आ गया? yes sir. Then next topic, that is the random forest algorithm. So random forest algorithm, that is a popular machine learning algorithm, and that belong to the supervised learning technique. Means we have the data, we know the input and we know the output. So it can be used for the both for the classification as well as regression problem in a machine learning. So it is the based on the concept of assemble learning, which is the process of combining multiple classifier to solve the complex problem, and it will improve the performance of that particular model. अभी इसमें नाम में बता है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम. रैंडम मीन्स व्हाट, मीन्स हम रैंडमली हम सिलेक्ट करेंगे. फॉरेस्ट मीन्स व्हाट, जैसे कि जंगल होता है. सो इफ़ यू हैव द डेटा, सो रैंडमली हम क्या करेंगे, वो डेटा को चूज करेंगे, डेटा को पिकअप करेंगे और उससे हम क्या बनाएंगे, वी कैन हैव द नंबर ऑफ डिसीजन ट्री. रैंडमली हम डेटा सिलेक्ट करेंगे और उस डेटा के कौन से फीचर है, उस फीचर के ऊपर हम क्या बनाएंगे, डिसीजन ट्री बनाएंगे. सो फॉरेस्ट में, जैसे कि फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है नहीं, बहुत सारे पेड़ होते हैं
बहुत सारे फल होते हैं, बहुत सारे फ्रूट होते हैं। तो सेम वे इफ वी हैव द प्रॉब्लम, we if we have the complex problem, at that time we pick the random data from that particular complex data, and from that particular data we will have the decision tree on the basis of the different features of that particular data or the object. So that particular name suggests that is random forest is a classifier that contains a number of decision tree on a various subset of a given data set or a given data. जो हमारे पास डेटा है उससे वो डेटा सबसेट है, उसके बेसिस के ऊपर, उसके फीचर के ऊपर हम क्या बनाएंगे, बहुत सारे डिसीजन ट्री बनाएंगे, एंड इट टेक्स द एवरेज टू इम्प्रूव द प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा सेट। समझो एक डेटा सेट उठाया हमने, एक ऑब्जेक्ट उठाया, उसके कौन से फीचर है, उसके फीचर के ऊपर अगर हमने 8-10 डिसीजन ट्री बनाया और हर एक डिसीजन ट्री का आउटपुट देखा, अगर उसका डिसीजन ट्री का आउटपुट 10 डिसीजन ट्री बनाया, 10 में से अगर 8 का आउटपुट अगर ट्रू आता है, इसका मतलब वो डेटा सेट क्या है, ट्रू है। द सेम वे दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज यूज टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. So this particular algorithm is a random forest algorithm. So the greater the number of tree, the greater the number of decision tree in the forest lead to the higher accuracy and prevent the problem of overfitting. So if you see this particular diagram, you can easily understood how to predict the particular data, or how to predict the output, or how to predict the class of the particular data. सो दिस इज ट्रेनिंग डेटा. एक ट्रेनिंग डेटा आ गया, उसके ऊपर डिसीजन ट्री बनाया, बहुत सारे डिसीजन ट्री बनाया, उसका आउटपुट ले दिया क्या आता है. दूसरा ट्रेनिंग डेटा है, उसका डिसीजन ट्री बनाया, उसका आउटपुट देखेंगे क्या है. तीसरा ट्रेनिंग डेटा है, उसका भी हम क्या बनाएंगे, डिसीजन ट्री बनाएंगे, उसका आउटपुट देखेंगे क्या है. सो इन सब का मिला के इसका एवरेज करके हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड और वी will try to predict the output. This is the you can say a random forest algorithm. So there are the assumption in the random forest algorithm. आपको डायग्राम समझ में आ गई है. डेटा उठाना है, ऑब्जेक्ट उठाना है, वहाँ से डिसीजन ट्री बनानी है उसके फीचर के अकॉर्डिंग, एक डेटा के लिए, दूसरे डेटा के लिए, तीसरी डेटा के लिए, और जो हमारा ये है डिसीजन ट्री है उसका आउटपुट देखना है. जितना ज़्यादा आउटपुट आता है, मीन्स अगर ट्रू आता है तो एवरेजिंग करके उसका प्रेडिक्शन हम बनेंगे दैट द आउटपुट इज ट्रू. सो random forest combines the multiple trees to predict the class of that particular data set. So it is possible that some decision tree may predict the correct output while other may not. So but together all trees predict the correct output. So there are two assumptions in the random forest algorithm. There should be some actual values in the feature variable of the particular data set, so the classifier can predict the accurate result rather than a guess result. So in random forest algorithm, it will predict the actual result, it will predict the correct output, it will not predict the guess. Guess नहीं आपको बताता है, it will predict the correct output, it will give you the accurate result from that particular decision tree. The prediction from each tree must have very low correlation. Means what? If you have the 10 decision tree, so one decision tree will not have relation, or one decision tree will not have any relation with the previous one or second one. So the relation between this particular decision tree is very low. So this way we can have the output on the basis of decision tree and we can get the correct result by using the
random forest algorithm. So why use the random forest? So it takes a less training time as compared to other algorithm. So training the algorithm as compared to other algorithm, it takes the less time. It predict the output with high accuracy. It will not give you the guesses. It will give you the correct output. It will give you the actual output from the large number of data set. It also maintains the accuracy when large proportion of data is particular missing. So some feature is missing, some data is missing, though that particular random forest algorithm will predict the output very correctly. Then where we use this particular random forest algorithm? So there are different applications where we can use the random forest algorithm. The first application means the first sector where we can use the random forest algorithm, that is banking. In banking sector, this particular algorithm is used for identification of loan risk, whether to give the loan to particular person or not by using this particular random forest algorithm. So it can have the different decision trees. Means जो लोन मांगने को आया है उसको सैलरी एम्प्लॉय है क्या, इसकी तनख्वाह कितनी है, परमानेंट है क्या, उसका और उसके रिटर्न्स कितने हैं. So on the basis of they have the different decision tree. So according to that particular decision tree, that particular algorithm will give you the output whether to give the loan to that particular person or not, according to the different output, the output of the decision various decision tree. अगर आप कभी बैंक में गए हो, अगर आपने कभी लोन मांगा हो, तो आपको बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो. एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. है क्या नहीं? तो आपके नाम पर कौन सी प्रॉपर्टी है क्या नहीं. अगर आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी आपके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं है, अगर नहीं है, आप सैलरी एम्प्लॉय नहीं है, आपका फिक्स इनकम नहीं है, तो बैंक सोचती है आपको लोन दे या नहीं दे. सो दिस पर्टिकुलर डेटा विल पुट इनटू दैट पर्टिकुलर मॉडल of that particular banking sector, and it will give you the output whether to give the loan to that particular person or not. So this is particular application of a random forest. It will give the correct output on the decision tree. Then medicine. So with the help of this particular algorithm, disease trend and the risk of that particular disease can be identified. Then land use, we can identify the areas of similar land used by this particular algorithm. Similar land कैसी है, जैसे कि कुछ कमर्शियल स्पॉट होते हैं, आजू बाजू का एरिया रेसिडेंशियल होता है, तो वी हैव दिस पर्टिकुलर model to identify the similar area, similar land. Then marketing. So marketing trends can be identified using this particular algorithm. What is the marketing trends nowadays in a different fields? So these are the different application of random forest. Then advantages, some advantages. Random forest is capable of performing both classification and regression tasks. So it is capable to have the classification as well as regression. It is capable of handling the large data set with highly dimensionality. So जैसे कि नाम में ही उसके है, that is forest. So it is capable to have or to handle the large data set. Then it enhance the accuracy of the model and prevent the overfitting issue. जैसे कि हमने पहले ही देखा how it will prevent the overfitting issue. Then disadvantages. So random forest can be used for the both of the classification and the regression task. It cannot or it will not suitable for the regression task. It is suitable for the classification, but it is not more suitable for the regression. Though it is have the capacity for the regression, but it is not more suitable for the task that is the regression. Understood? Random forest, how it will predict the data, how will give you the output, how
that particular random forest algorithm give you the result. Understood? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बाकी के स्टूडेंट कहाँ पे हैं? हाँ, then Navy bias classification. So this is also algorithm is a supervised learning algorithm which is based on Bayes theorem, and it is used for solving the classification problem. So it is mainly used in the text classification that include the high dimensional training data set. This particular Navy bias classifier is one of the simple and the most effective classification algorithm which help in the building the fast machine learning model that can make the quick prediction. So this particular classification use the probability. ये क्या करता है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमें क्या देता है, क्लासिफिकेशन देता है. जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स है और वी हैव टू identify the fruit which have the different categories, like the color of that fruit is orange, the shape of that particular fruit is oval, and the shape is long, and the that fruit is sweet. Suppose we have to identify this particular fruit, and we have the different fruits like orange, banana, and other fruits. Like in other category we can have the different fruits like the mangoes, papaya, and other fruits. सो अगर ऐसे हमारे पास फ्रूट है और हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसा फ्रूट हमें चाहिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी हो, या उसका फीचर ऐसी हो कि वो ऑरेंज होना चाहिए, वो लंबा होना चाहिए, और वो पीले कलर का होना चाहिए. तो बहुत सारे फ्रूट है, मान लो क्वांटिटी आपके पास 1000 है. सो 1000 में ऐसे कितने फ्रूट है कि उसका रंग ऑरेंज है, वो स्वीट है, और वो लंबे हैं. अगर हमारे पास बनाना है, ऑरेंज है, और बहुत सारे फ्रूट्स है. सो दिस पर्टिकुलर algorithm, it works on the probability basis. So there is a formula to predict the probability. So why it is called a Navy bias? So Navy, it is called as a Navy because it assumes that occurrence of the certain features is independent of the occurrence of other feature. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सर्टन फीचर का ऑकरेंस होता है और दूसरे फीचर्स के ऑकरेंस के उसको कुछ फ़र्क नहीं गिरता है. जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, बहुत सारे फ्रूट है, सैम्पल साइज है थाउजेंड्स, बहुत प्रकार के फ्रूट है, उसके ऊपर बहुत टाइप के फ्रूट है उसमें, और हमें ऐसा फ्रूट सिलेक्ट करना है कि उसका कलर ऑरेंज हो, येलो हो, या ऑरेंज हो, और स्वीट हो, और लंबा हो. उसके साथ दूसरे भी फ्रूट है, जैसे कि बनाना है, मैंगो है, पपाया है, और दूसरे सारे फ्रूट है. सो ऑकरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ अदर फीचर्स, है क्या नहीं. मैंगो के फीचर अलग है, बनाना के फीचर अलग है, ऑरेंज के फीचर अलग है. सो if this particular fruit is identified on the basis of that particular color, shape, and taste, then it may have the color orange, it may have the shape is long, it may have the taste is sweet. So we have to identify this particular feature individually that contribute to identify, and that it is an orange without depending on each other. सो हम ऐसे कह सकते हैं ये ऑरेंज ही फ्रूट है, इनमें सारे से उसका येलो कलर है या ऑरेंज कलर है, वो उसका शेप ये है, गोल है, वो लंबा नहीं है. एंड बायस मीन्स व्हाट? सो इट इज़ कॉल्ड बायस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर principle of Bayes theorem. So Bayes theorem what says, if you
calculate the probability how that particular fruit will be available in out of from 1,000 fruits. So you can have the Bayes theorem, you can have the probability. The Bayes theorem क्या कहता है? Probability of A given that probability B is equal to probability of B given that probability A into probability A upon probability of B. So this is the Bayes theorem. So according to this particular probability, or according to this particular theorem, you can predict how many orange are there present there in the different fruit. उनमें से मैंने अभी बोला आपको कि थाउजेंड्स फ्रूट है, थाउजेंड्स में हमें क्या चाहिए, वो फ्रूट ऐसा चाहिए कि वो उसका कलर येलो हो, उसका टेस्ट स्वीट हो, और वो क्या होना चाहिए, उसका शेप क्या होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। लॉन्ग नहीं है लेकिन उसकी हम प्रोबेबिलिटी, अगर उसका शेप लॉन्ग नहीं है बट उसका कलर येलो है और उसका टेस्ट क्या है, स्वीट है, ऐसे कौन से फ्रूट है, अगर हमें ये निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो हमें ये बायसम थ्योरम का यूज़ करके वी कैन इजीली प्रिडिक्ट एंड वी कैन इजीली क्लासीफाई दैट पर्टिकुलर फ्रूट फ्रॉम द अदर फ्रूट। सो दिस पर्टिकुलर नेवी बायसम algorithm is used for the classification। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इतने सारे फल है, इतने सारे फ्रूट्स है, और उसमें से हमें ऐसे फ्रूट चाहिए कि उसके फीचर ये है। तो by using this particular theorem we can easily have, or we can easily identify the particular fruit, we can easily identify the probability availability of that particular fruit. So probability of A given probability of B is a posterior probability and probability of hypothesis on the observed event B. So this is the mathematical term. This particular, if you have this particular value, you put this particular value and you can get the probability how the particular occurrence of your fruit according to your feature, what the different features you have identified. Suppose we can have another example how the particular Nevis Bayes classifier works. So suppose we have the data set of the weather condition and corresponding target variable that is the play. हमें वेदर कंडीशन देखनी है और उस वेदर कंडीशन के हिसाब से हम खेल सकते हैं या नहीं। जैसे कि क्रिकेट देखते हो आप, है कि नहीं? क्रिकेट में अगर रेनी सीज़न होता है, बारिश ज़्यादा आती है, तो हम उस मैदान के ऊपर खेल सकते हैं क्या नहीं। तो हम ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि इतनी बारिश हो गई तो हम उस मैदान के ऊपर जा सकते हैं और खेल सकते हैं, इतने बारिश होने के कारण हम उस मैदान पर जाकर खेल नहीं सकते। द सेम प्रॉब्लम using the data set, we need to decide whether we should play or not on a particular day according to the weather condition. So to solve this particular problem, we follow the particular steps. There are different steps to solve the problem by using the Bayes classification. So convert the given data set into the frequency table, general likelihood table, by finding the probabilities of the given features, and now use the Bayes theorem to calculate the posterior probability. So problem, if the weather is sunny, then the player should play or not. अगर weather condition sunny है, then we have to find out whether the player should play or not. So solution कैसे निकालेंगे हम इसका? To solve this, first consider the data set, outlook and play. So first this is outlook क्या है, rainy, play क्या कर सकते हैं हम, yes, sunny, yes. Then second है overcast, yes, overcast, yes, sunny, no, rain, rainy, yes, sunny, yes. So we have this type of data set, means trained data set, and according to this particular frequency, according to this particular data set, we can have the frequency table of the weather condition. जैसे कि ओवरकास्ट है, यस कितने वक्त आ गया है, 5 वक्त, नो कितने वक्त आ गया है, 0 वक्त। रेनी में कितने, अगर रेनी है, बारिश हो रही है, तो हम खेल सकते हैं क्या, 2 बार खेल सकते हैं, 2 बार नहीं खेल सकते, मीन्स अगर ज़्यादा रेन है तो नहीं खेल सकते। सनी है
तो कितना सनी है, 3 बार यस कह सकते हैं, 2 बार नहीं कह सकते। सो टोटल यस कितने हो गए 10, और यहाँ पे नो कितने हो गए 5। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर likelihood table weather condition, overcast yes 5, rainy 2 2, sunny 2 3. So this is the probability, overcast 0.35, rainy 0.29, sunny की probability अगर इतनी है 0.35, then all की probability इतने आ गए। So by applying this particular on a bias theorem, sunny yes, then 3 upon 10, that is 0.3, that is the probability. If we have the sunny and we have to play, then there is probability of 0.3, then sunny की probability 0.35, yes की probability 0.71, then probability of yes sunny, that is probability of 0.60. So we have to put this particular data onto this Bayesian theorem, and you got the particular answer. So the यहाँ पे अगर सनी है हम कितने नहीं खेल सकते, कितने बार है, अगर सनी 2 बार आ गया, नो 4 बार आ गया, तो प्रोबेबिलिटी आई 0.5, गिवन नो इज 0.29, सनी इज इक्वल टू 0.35, so probability of no and there is sunny, so we can have 0.41. So we can see from the above calculation that probability of yes and given that probability of sunny is greater than probability of no given that probability of sunny. So this yes and sunny, the probability of sunny and we can play, this probability is greater than the no and whether the probability is sunny. So hence we can play the game if the day is sunny and player can play the game. So we have to put just the value in this particular Bayesian theorem, and we can have the answer whether we can predict the data or whether we can class the particular data. So उस थ्योरम में है ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में आपको क्या डालना है, you have to put only the values. Bayesian theorem. So I will share one video of this particular Bayesian theorem so you can easily understood. Then advantages of this particular Bayesian Naive Bayes classifier, that Naive Bayes is one of the fast and easy machine learning algorithm to predict the class on a particular data set. For that purpose we have the data set, we have the probability, and we have to just put that particular value of the probability into the Bayesian theorem, and we can easily means we can easily predict or class the particular data using that particular Bayesian theorem. It can be used for the binary as well as multi-class classification. It performs well in the multi-class prediction as compared to the other algorithm, and it is most popular choice for the text classification problem. The disadvantages, thus Bayes assumes that all the features are independent or unrelated, so it cannot be learned the relationship between the particular feature. So the features is independent, and it cannot learn, or it cannot learn the relationship between the features of the different data set. So where this particular Bayesian classifier works, or what are the different application of this particular Bayes classifier? It is used for the credit scoring, it is used for the medical data classification, it can be used in a real-time prediction, also it is used in text classification such as spam filtering and sentiment analysis. Then there are types, that is Gaussian. This is the Gaussian model. Assume that the features follow a normal distribution condition. This means if predictors take the continuous value instead of the discrete value, then the model assumes that these values are sampled from the Gaussian distribution. So these are the mathematical term, that is the Gaussian distribution theorem is used in a Bayes model, another type of that particular Naive Bayes model. Then multidimensional and Bernoulli. These are the another classifier that is similar work on the
multinomial classifier. So these are the three types: multinomial, Bernoulli, and the Gaussian. So this is about the what you can say, the bias, Navy bias classification. So I will share one video of this particular Navy bias classification, so you can easily understood what is the Navy bias classification. I have one video which is based on the fruits, how to classify the fruits or how to predict the data. So today we will stop here, और जो क्लास नहीं करते हैं उन्हें बता दीजिए.